हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं इन डिटेल। रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, ये दो पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बट बहुत लोगों को इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन रहता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ? बिफोर वी बिगिन द वीडियो, वी हैव अ सिंसियर रिक्वेस्ट. If you find these videos helpful and informative for your UPSC and state PCS preparation, do like, share and subscribe Exact IAS on YouTube and follow us on Instagram. Let us first understand what is rule of law. इस rule of law को propound किया गया था by A.V. Dicey in his classical work The Law and the Constitution, जिसे 1885 में publish किया गया था. According to rule of law, याद रखिएगा, द लैटिन टर्म लेक्स इज रेक्स एप्लीकेबल है. लेक्स इज रेक्स का मतलब लॉ इज किंग. लीगल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, लिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ पावर एटसेट्रा, ये सब चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. लॉ एंड लीगल प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर सुप्रीम एंड एवरीबडी एल्स इज बाउंड बाय देम. रूल ऑफ लॉ का इंपॉर्टेंट फीचर्स है. नंबर 1, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. कोई भी व्यक्ति या ग्रुप लॉ के ऊपर नहीं है एंड एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड. नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ. That is, everybody is subject to the same laws and is treated equally under them. Number 3, fairness and impartiality. अगर कोई भी legal decision लिया जाता है, it is made without any prejudice or bias towards any individual or group. Number 4, transparency. Judicial processes and decisions open and transparent होने चाहिए ताकि common citizens को पता चले कि क्या और क्यों ऐसे decisions लिए गए हैं. Number 5, accountability. जो लोग responsible है for enforcing and administering the law, वो खुद भी subject है to the same law और अपने किसी भी गलत actions के लिए accountable रहेंगे. Number 6, protection of human rights. रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा महत्व देता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को और प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस. रूल ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस में एम्बेड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल. Article 13 Clause 1 कहता है that the Constitution shall be the supreme law of the land and other laws have to conform to the Constitution. Article 21 कहता है no person shall be deprived of his life or liberty except according to procedure established by law. No person can be denied equality before law or the equal protection of law within the territory of India. Article 14 भी कहता है that states will not deny any person equality before law or equal protection of law, nor can the state discriminate on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 51 talks of separation of power between judiciary and executive. लेकिन रूल ऑफ लॉ के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के अंदर अफर्मेटिव एक्शंस लाइक रिजर्वेशन को अलाउ किया गया है, विच मे लीड टू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. आर्टिकल 105 एंड 194 कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, बाय विच दे आर गिवन सर्टेन लीगल इम्यूनिटी. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को भी कुछ क्रिमिनल इम्यूनिटी दिया गया है अंडर आर्टिकल 361. सिमिलरली डिप्लोमैट्स आर ऑल्सो गिवन डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी. अब समझते हैं रूल बाय लॉ क्या है. जैसे रूल ऑफ लॉ कहता है लॉ इज किंग, रूल बाय लॉ कहता है रेक्स इज लेक्स, यानी किंग इज लॉ. इस आइडिया को प्रोपैगेट किया गया था बाय किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द चर्च. What he wanted to establish is that king should be supreme and has to be obeyed by one and all. जो king कहेगा वही law बनेगा. इसलिए rule by law को rule by man भी कहा जाता है, as any law which is laid down by the supreme law-making authority of the land becomes the supreme law. अगर देखा जाए तो rule by law is a principle by which autocrats and tyrants live by. In the early 1900s, Nazi Germany under the dictatorship of Adolf Hitler oversaw the mass genocide of Jews which were backed by laws. South Africa maybe, the apartheid regime was justified by such autocratic laws.
इन रिसेंट टाइम्स नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटोरियल कंट्रीज में लॉस को इम्पोज किया जाता है बेस्ड ऑन द whims and fancy of the government. In North Korea, there is a major restriction of freedom of speech and expression. People are allowed to worship only their leader. They are allowed to cut their hair in government approved hairstyles. And the government has come out with the list of names people can use for the babies and children. What are the features of rule by law? देखा जाए तो रूल बाय लॉ इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू रूल ऑफ लॉ. Number 1, in rule by law, the king, lawmaker, or whoever is the head of the state, he or she is supreme and his or her word becomes the law. Number 2, not everybody is treated equally, nor do they receive equal protection of law. Number 3, decision making and application of law is absolutely arbitrary. Number 4, generally judicial processes are opaque, vague, and do not allow accountability. Most democracies uphold rule of law while autocratic nations apply rule by law. कुछ देश ऐसे हैं जहां पर rule by law apply होता है, but they pose as a nation that follows rule of law. Saudi Arabia and Pakistan are such examples. To summarize, याद रखिएगा that nations should aspire for rule of law which restrains the supreme law-making authority of the land. यानी ऐसे government और authority के unlimited powers नहीं हो सकते हैं because they are made accountable. Fundamental rights and equality of individuals are given primacy. Rule by law is the opposite of rule of law. Rule by law के अंडर जो भी supreme law-making authority king या government है, his or her word becomes the law of the land, and it does not promote equality. They exercise unlimited power and have no accountability. Instead, vagueness and arbitrariness is the norm of the land. This brings us to the end of our video. If you find these videos helpful and informative for your UPSC and state PCS preparation, do like, share, and subscribe Exact IAS on YouTube and follow us on Instagram. Thank you for watching this. I will see you in our next.